So, hello everyone. Today we are going to discuss support vector machine, and this is one of the important supervised learning technique that we have to actually know. तो support vector machine, जैसे मैंने कहा ये important एक supervised learning technique है. So this is one of the most popular supervised learning technique which is used for both classification and regression. Classification जहाँ आपका leveling based output hai, means either some class levels will be the output or some suppose some numerical prediction are there. Let me give you an example. Okay, so suppose today is going to rain or not. ठीक है, तो इसका आउटपुट आइदर ये बारिश होने वाली है yes or no. ठीक है, so that will be falling under classification. But if we go for class, trying to find out or trying to predict that कितना volume होगा बारिश का जो rain का जो कितना volume होगा, then that numerical value prediction will come under fall under regression. ठीक है, तो SBM को हम classification as well as regression दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. बट बेसिकली हम प्रिफर करेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही यूज करें. नाउ ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू नो द टर्मिनोलॉजीज वेरी वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the goal of the SVM is to create the baseline or decision boundary that can segregate n-dimensional space into classes that we can easily put the new data point in the correct category in the future. मतलब ये है कि आपका n dimensional जो space है, ठीक है, अब ये आप मान सकते हो कि जो भी डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है ये एक स्पेशल बाउंड्री और एक आप बोल सकते हो डिसीजन बाउंड्री के जरिए हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ताकि इन फ्यूचर इफ सम न्यू डाटा पॉइंट कम्स देन दिस एल्गोरिथम train model will put that particular data point into the correct category. ठीक है, तो ये डिसीजन बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर प्लेन. तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, जैसे आपको पहले तो मिल गया hyperplane and that those values, okay, those values, those points which are near to that hyperplane are known as support vector. Let me tell you again, SVM chooses the extreme points or vectors that help in creating the hyperplane, and these extreme cases are known as support vectors, and hence इसको हम बोलते हैं support vector machine. तो यहाँ ये डायग्राम में देखो, ये ब्लू पॉइंट्स एंड ये ग्रीन पॉइंट, these are the green points and these are the blue point. Now these three are hyperplane. Now those points, suppose these two, you can see this one, so they are very near or very close to the hyperplane, this positive hyperplane, this side hyperplane, and this point is very close to this hyperplane. So they will be known as support vector, and that hyperplane which is at maximum distance from those or you can say better you have to say, आपको ये बोलना चाहिए कि वो हाइपरप्लेन जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम मार्जिन मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन. और मार्जिन क्या है, आपको ये पॉजिटिव हाइपरप्लेन और नेगेटिव हाइपरप्लेन दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मार्जिन. हो गया. अब there are two different types of SVM. First is linear SVM. जब data points linearly separable हो, if the data points are linearly separable, माने means if a data set can be classified into two classes by using only a single straight line, then says that SVM will be known as linear SVM. मतलब ऐसा दिया हुआ डाटा पॉइंट्स है जिसको हम इजीली एक स्ट्रेट लाइन के जरिए दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, देन हम उस एसवीएम को बोलेंगे जिसके जरिए हमने हाइपर प्लेन को ड्रॉ किया, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर एसवीएम. कभी कभी आपको नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा भी मिलेगा जहां एक स्ट्रेट लाइन से सबको क्लासिफाई कर पाना मुश्किल है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन लीनियर एसवीएम क्लासिफायर यूज करना होगा. नाउ हाउ दिस एसवीएम or support vector machine algorithm works.
First of all, the means most important thing is to find out the best hyperplane that maximizes the separation margin between the two classes. मैं ऑलरेडी बोला कि आपको वो हाइपरप्लेन को बेस्ट मान के चलना चाहिए जिसके कारण मैक्सिमम मार्जिन मिले। और ये मार्जिन क्या कर रहा है, जो दोनों क्लासेस हैं उनको प्रॉपरली सेपरेट कर रहा है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। So the maximum margin hyperplane, also referred as hard margin, is selected based on the maximizing the distance between the hyperplane and the nearest data points on which each side, on each side। ठीक है। जैसे ये एक सपोर्ट वेक्टर है, सपोज ये, और ये एक सपोर्ट वेक्टर है, ये पार्टिकुलर पैरेलल हाइपरप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। नाउ हमने L2 को बेस्ट हाइपरप्लेन चूज किया क्योंकि L2 के कारण ये मार्जिन का डिस्टेंस मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है। नाउ कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स हमेशा मिलेगा, दोज डेटा पॉइंट्स व्हिच आर एक्चुअली you can say mixed with some different types of data points, then those data points will be regarded as the outlier. Like in this case, you can see these are the red points, data points, and in this red data points you will find one blue one। ठीक है। अभी जब हम इसको when we draw a hyperplane, then it will be very difficult to select or you can say consider this point under the that particular hyperplane. So it means that we cannot classify it into one of those two classes। ये दोनों में से किसी में नहीं आएगा, रेड में तो आएगा ही नहीं और ब्लू में भी नहीं आएगा। देन वी विल कंसीडर दैट एज व्हाट, आउटलायर। गॉट इट ना। तो ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको डेटा पॉइंट, दिस विल बी रिगार्डेड एज आउटलायर। ओके। नाउ ये हो गया आपका। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसवीएम एल्गोरिथम है, इट इज वेरी रोबस्ट टू आउटलायर्स। आउटलायर्स होगा तो ये इग्नोर करके जाएगा, इट विल जस्ट इग्नोर द आउटलायर्स। ठीक है। जस्ट 1 minute। नाउ in this type of SVM, and about, you can say in this type of data point, what SVM does is to find the maximum margin, which will that is done before. Along with it adds a penalty each time a point crosses the margin। जैसे वो ब्लू पॉइंट ने मार्जिन को क्रॉस किया था, जिस साइड में उसको होना चाहिए था वो नहीं था, वो अपोजिट साइड में था। तो जैसे वो मार्जिन को क्रॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पेनाल्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। And the margin in this type of cases are known as soft margin, and there is a soft, when there is a soft margin in the data set, SVM tries to minimize what, 1 by margin plus this particular penalty terms। Then one more technical term is there, hinge loss, and this is used or commonly used as penalty। अगर कोई violation नहीं किया है तो no hinge loss। If violation, then hinge loss proportional to the distance of the violation, कितना distance वो margin को cross करके आ गया है। ठीक है। तो ये है आपका नॉन लिनियर डेटा पॉइंट्स। अब इसको हम कोई एक हाइपरप्लेन के जरिए क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस वन न्यू डायमेंशन टू दिस, राइट। तो ये यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करके एक नया आपका डायमेंशन क्रिएट करेंगे। Okay, so we call a point xi on the line and we create a new variable y as a function of distance from the origin। So if we plot this, समझ में आ रहा है ना, ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये कैलकुलेट करके हमने नया एक वेरिएबल y में रख दिया। ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। Now in this graph, it is very easy to create a pipeline so that we can separate these data। ठीक है, हो गया। So mapping 1D to 2D become able to separate the two classes। Now the terminologies whom I think that very important in this case is, first one is the hyperplane, of course,
hyperplane, you just got it. If it is a linear equation, अगर ये linear equation है, linear classification है, तो आप just एक straight line को मान सकते हो. That equation will be wx plus b is equal to 0. Now support vector समझ में आ गया. Those closest data points to the hyperplane, they are known as support vector, and these are very critical in determining the hyperplane and the margin in the SVM. Margin, you got it, the distance between the support vector and the hyperplane. And we always try to maximize the margin. Yes. So don't forget that in machine learning, our objective equation should be very clear, that whatever equation we are putting, we try to either minimize or maximize that equation value. In this case, we are trying to maximize this. ठीक है, हम इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि बेटर क्लासिफिकेशन रिजल्ट मिले. Then one more mathematical function we are using here, that is kernel. So kernel, that mathematical function we use in SVM to map input data into higher dimensional feature space. ठीक है. This allows SVM to find a hyperplane in cases where data points are not linear. जैसे अभी थोड़ी थर्ड लेवल आप लोगों को बताया था नॉन लिनियरली सेपरेबल डाटा में, वहां पे हमने क्या किया, एक और डायमेंशन क्रिएट किया. तो कार्नेल के जरिए, with the help of the kernel functions, we can add those extra dimension to our feature space. And those different kernel functions are like linear, polynomial, radial basis functions, sigmoid. There are so many functions are there. As per your requirements, you can choose one. तो आप लोग कुछ भी ले सकते. जैसे मैंने आप लोगों को न्यूरल नेटवर्क पढ़ाया था, तो उसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शंस आइडर रिल्यू यूज किया है, आइडर सिग्मॉइड यूज किया है. एज पर द रिक्वायरमेंट आपको डेटा के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा. आफ्टर दैट you can choose a proper kernel function, or you can choose a proper activation function. Got it? Then there are two margin, hard just for the linearly separable data points, we can go for it, and soft when there are not perfectly separable data points, then we can go for soft margin technique. And in this case, it introduces slack variable for each data point to allow some misclassification, okay, while balancing the between maximizing the margin and minimizing the violations. ठीक है, तो वो select variables हम include यूज करते हैं. Then C parameters, just 1 minute. C parameters, okay. तो क्या मैं बोल रहा था, C parameter. C parameter is a regularization term that balances margin maximization and the penalty for misclassification. And remember that higher C value imposes a stricter penalty for margin violation. ठीक है, higher C value means stricter penalty. ठीक है, leading to smaller margin but fewer misclassification. Then Hind's loss, I told you already that Hind's loss means a common loss function which penalizes the misclassified point. जो margin को cross करके आ रहा है, margin को वायलेट करके आ रहे हैं, तो हम एक लॉस और पेनाल्टी जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये लॉस फंक्शन के जरिए वो कैलकुलेट करते हैं. देन dual problem means involves some solving for the Lagrange's multipliers associated with the support vectors, and it allows for the use of kernel trick and facilitates more efficient computation. तो ये हो गया आपका theoretical और the mathematical part. Now I'll show you the practical in the Colab. Just give me some time. Okay, so you can see the code here. I'm using the numpy. Okay, I'm importing it because some array-based calculations are there, so I'm importing numpy. And then we are using structured data. We have to create data frame, right? So that's why we are using pandas. Import pandas as PD. देन हमें ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना होगा. ठीक है, तो वो हम ले रहे हैं sklearn.model सिलेक्शन से ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट डाटा. ठीक है, देन अभी वी हैव टू कैलकुलेट MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर. देन another one is R square score.
So this will help us to find out that what is the difference between the predicted output and the expected output, and that what you are predicting. So that difference will be calculated by it. Always our aim is to minimize this value. Then we need to show our results to the users. So for that, I'm using matplotlib 5plot as plot. Okay, so as plot means we are just creating one instance out of it, so we don't need to write again and again. Just 1 minute, huh? Oh, just 1 second. Okay, so we are including these three libraries, and then we have to split the data set into two files, that is training and the testing. So for that we are using what train test split, and that is we are getting it from sklearn model selection. Okay, तो यहाँ से हमने ये train test split लिया, and after that we have to import a matrix. So matrix हमने क्या क्या लिया है, mean squared error and r square score. Okay, then as I told you already that we have to visualize the data or that output results. So for that we are using pyplot. Okay, then the data set here I'm going to use iris data set. So iris data set एक important data set है. Let me show you the classification of it. Classification मतलब there are three different types of iris. Iris एक फ्लोर का नाम है, इसमें आपका 3 varieties है, राइट? चिटोसा, भार्सिकलर एंड भार्सिनिका. एंड ये जो हमने सेपरेशन किया है बेस ऑफ सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पिटल लेंथ एंड पिटल विड्थ. ठीक है, लेट मी शो यू द इमेजेस. You can see here, this is iris versicolor, iris chitosa, and this is iris virginica. तो हमें ये क्लासिफाई करना है कि which this iris belongs to which particular specific type. Okay, so now we are loading this iris dataset in iris. Then we have to create a data frame. df is the data frame. So in the data frame we have put this data and the features. Then under this we are taking target as the targeted features, and there we are putting this particular value. तो ये हमने रख लिया. Then some rows we want to show from this data frame. तो यहाँ से हमने df.h से ये particular values को show कर दिया. तो you can go for different curves to have a better look on this data. So यहाँ से आपका बहुत सारे मिल जाएगा कर्व, आप जिसकी भी यूज करके आप देख सकते हो. ठीक है, देन हमने क्या किया, एक्स एक्सिस मतलब x एंड y में डाटा को रख लिया. x train, y train, x test, y test, 10 test split, x y test size 0.3. So we are splitting it to 70 to 30% for test data set. Random state मैं पहले भी बोला हूँ 42 हम लेते हैं, but it is not mandatory. But data science और machine learning में 42 आपका default जैसे हो गया है. ठीक है, now we are creating one SVM model. For that I am choosing linear kernel. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको SBC kernel equal to linear. तो ये हमने SVM मॉडल में पुट किया और SVM मॉडल में हमने X train and Y train डेटा फीड कर दिया. उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया, SVM model predict X test, and from the prediction now let's try to find out the accuracy. इसके लिए हमने क्या किया है, import accuracy score Y test, Y predicts. ठीक है, टेस्ट किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था प्रेडिक्शन से और मिला एग्जैक्टली वो, उससे हमने फाइंड आउट किया एक्यूरेसी. दैट सो द एक्यूरेसी आउटपुट, एक्यूरेसी हमें 1.0 मिला है, तो इट इज 100% एक्यूरेट. ओके, देन हमने एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स किया और उसमें हमने कलरफुल और एक या बोल सकते हैं आप सीबोर्न हम यूज किया है, इंपोर्ट सीबोर्न एसएनएस हीट मैप हमने यूज किया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए. कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई ट्रेस, वाई प्रेडिक्शन, शीट एसएनएस डॉट हीट मैप सीएम ट्रू एफएमटीडी. तो एक्स लेवल प्रेडिक्टेड, एक्चुअल कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर एसपीएम क्लासिफिकेशन. तो ये हमारा फाइनल जो है आपका
एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब डायरेक्टली यू कैन सी हियर दिस इज प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल, तो हमें 13 मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली दिस इज 19, दिस इज 13। तो जितना था, सो 13 हमने प्रेडिक्टेड किया था ये पार्टिकुलर वेराइटी का, सपोज 1 का, तो उतना 13 हमें एक्चुअल में भी मिला। तो क्या हो रहा है, एक्यूरेसी 100% मिल रहा है। सिमिलरली सेकंड के लिए भी, और थर्ड, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सभी के लिए हमें जितना हमने प्रेडिक्ट किया था एक्यूरेट एग्जैक्टली वो इतना ही है। तो एक्यूरेसी इज 1, दैट इज 100%। तो दिस इज ऑल अबाउट एसपीएम। आई थिंक मैंने पूरा जितना था उसके ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन से लेकर प्रैक्टिकल कवर कर लिया है। तो आप लोगों को इसके ऊपर एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू एसबीएम करना है। ठीक है, एंड आस्क मी इफ एनी सच आइडिया इज इन योर माइंड, देन वी कैन गो फॉर इट। ओके, थैंक यू।